Hello, and once again, welcome to the penultimate day, of our 10-day non-stop online classes for foundation chemistry for class 11. Very surprisingly, I discovered that I had not given you the link, neither the Zoom link nor the YouTube link. And I realized as late as about 5 minutes to 5. Then my worries knew no bounds. But anyway, I could rush to my computer and schedule both Zoom and YouTube and gave you the link. And equally so, you also did not remember about that, and you did not also remind me about that. It happened for the first time. Because in the morning, I was busy in some reading, studying some other thing. So I forgot. I initially thought of scheduling today's program, but I somehow missed it and sidetracked and forgot about that. Anyway, better late than never. Better late than never. Today is the penultimate round. You have anything to ask me before? Excuse me, sir. Yes. Excuse Sir, me. हमें V/V% को gaseous state use कर परियो. Sir, V/V% को हमें gaseous state use कर परियो की. V/V%. V/V%. Well, yes, কিন্তু gas ର concept ଅଲଗା. କରିପାରିବ କିନ୍ତୁ ତାର concept ହଉଛି 22.4 liters. ସେଟା ହଉଛି STP ରେ 1 liter. ବୁଝିଲା? Yes, sir. କରିପାରିବ. ଗ୍ୟାସ ରେ ଭଲ୍ୟୁମ ପରସେଣ୍ଟ ଯାହା V/V% ଯାହା ମୋଲ ପରସେଣ୍ଟ ସେଇଆ. କାଲି ଆମେ ଡିସ୍କସ କରୁଥିଲେ, according to Avogadro's law, volumes of gases are directly proportional to their number of moles or number of molecules. ତେଣୁ ଭଲ୍ୟୁମ ପରସେଣ୍ଟ ଯାହା ମୋଲ ପରସେଣ୍ଟ ସେଇଆ, ଭଲ୍ୟୁମ ଫ୍ରାକ୍ସନ ଯାହା ମୋଲ ଫ୍ରାକ୍ସନ ସେଇଆ. You understood? Yes, sir. Any other question? No question? You are also fed up with the loading that is being done unto you continuously with newer and newer things. You have decided not to prepare, not to study, not to practice anything, but listen and watch what is going on. Okay, let us do that. Let us watch with full involvement, commitment, mind, with happy mind, the coming 1.5 hours. Jyotsna Mai, Madam, Namaskar. Jyots. Today, and I think only 2 of you answered yesterday's prize question. As usual, Mr. Rudra gave the correct answer, but Ayush gave the answer, but with little bit of error, right? Yes, sir. Your molality was correct, but the units were wrong.
right? Yes, sir. What is the unit of molality? Sir, mole per kg. Precisely. And what is the unit of molarity? Sir, Sir, moles mole per per liter. liter. Moles per liter. And what is the unit of mole fraction? Sir, unitless. Yes, it is unitless because it is a fraction. Right. Okay. We shall be taking off very fascinating. Anil sir, namaskar. Today we shall be entering into the most fascinating aspect of stoichiometry. Solution stoichiometry. We'll be using molarity, W by W, W by V percent. And also I will tell you another way of expressing concentration is normality, and introduce the equivalent concept, normality, to handle reactions, acid-base titration, redox titration, precipitation titration. All aspects, interesting aspects will be taken care of today. I will be giving you the concepts only to arouse your interest, your passion to solve in a later period, just like a cow digests after chewing the food. She or he, not she accumulates in her cecum and brings it back and chews and then gulps. So that you will be doing, it doesn't matter. So let me and share my screen first and disallow annotation. That is a nuisance. You might have experienced that the instructor faces horrible problems. Once this nuisance starts, the participant starts, annotating on the screen of the presenter. So this is the thing. We start. Today is 9th April, and we are only one day away to celebrate our closing ceremony. Tomorrow will be our closing ceremony. We'll be doing a lot of dance, music, all that towards the end, last part of our program. Now, supposing I'll ask you, since you did not have any question for me, or you didn't have any question to ask me, I have some questions to ask you. Question number one, supposing I give you, say, 200 milliliter. Immediately, when I say milliliter, I will talk about volume. You will definitely identify which kind of volume is this. Is it the so-called Paniya volume or gaseous volume? And accordingly, you proceed. Students, they commit blunders by mistaking Paniya volume as gaseous volume and extending 22.4 liter concept. They go totally wrong. 200 ml of 0.1 m solution of sulfuric acid I will prepare contains dash gram of pure sulfuric acid. When I say sulfuric acid, I mean pure sulfuric acid. ये पानी or solution. Solution माने पानी. Whatever problems that will be doing, they are all aqueous solution. Water is the solvent, and solutes are all variable, will be taking different solutions of different solutes. Maybe solute might be a solid one, maybe a liquid one, like sulfuric acid is a liquid dissolved in water. Sodium chloride is a solid dissolved in water. So I give you 1 minute time. You answer me. Rudra has raised his hand, but Rudra ta why ada?
but we have to wait. ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟକ୍ ସଲ୍ୟୁସନ କରିଥିଲି ସେଥିରୁ 200 ମିଲିଲିଟର ଗୋଟେ मेजरिंग पिपेट रे करके एक्जाक्टली 200 ml किंबा मेजरिंग सिलिंडर रे 200 ml मापिक तुमको आ गोटे जगह देली मु कहली ए 200 मिलीलीटर तार मोलारिटी होची 0.1 m पा 0.1 मोल्स पर लीटर ए सॉल्यूशन रो मु 200 मिलीलीटर देइची तमे मते कुह ता भितरे केते ग्राम प्योर सल्फ्यूरिक एसिड अछि anyone watching from YouTube, slowly and steadily the number rises. Today the same thing might happen. I fail to understand whenever I start with time. Initially the number of participants from the YouTube direct telecast, direct streaming is maybe 1 2 3 4, then slowly and steadily it increases. I can able to see how the graph of viewership is changing, rising, falling, rising, falling. It's very interesting. So Ayush has raised his hand. Sejal, a newcomer to our uranium fold, has also raised her hand. Sejal, can you tell me? So 1.96 gram. 1.96 gram. Yes, sir. Do you agree, Rudra? Sir, 19.6 gram. So Rudra says it is 19.6 gram. Ayush कौन कौचो? Sir, 1.96 gram. एटा हला सीजल एंड आयुष टला रुद्र. अब देखेंगे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा. समीधा मिस त्रिपाठी टिके टिके केयरफुली सुनो. प्रणव गुड आफ्टरनून गुड इवनिंग. हमें मजा करिबा. हमारा वी वेलकम आवर elder brother Krishna Agrawal. I have invited him to watch us and help us how we proceed. He will put his brain. Now I have given you 200 ml of 0.1 molar solution of sulfuric acid. I want you to tell me how much of pure sulfuric acid is present in gram. So I told you molarity is the number of moles of solute per liter of the solution. And in formula, we write is the number of what? Who can tell me? If we write number of millimoles of solute in the numerator, what shall I write in the denominator? Sir, volume of solution in milliliter. Volume of solution in milliliter. Otherwise, हमें number of moles भी लिखी पारथांते ऊपरे तले volume of the solution in liter करी थांते किंबा volume of solution in milliliter into 1000 गुणी थांते. किंतु सबुटु best way to handle हमें stoichiometry भितरे पसिबा सबु milliliter रो खेल maximum milliliter रो खेल हबो. solution भितरे add कले reaction हबो. ये सब जिनस हमें देखिबा आजी धीरे धीरे देखिबा. तो सेथिरे ए मिलीमोल बाय मिलीलीटर टा बहुत तुमको भल लागिवो जदी तुमे अंक रे टिके स्ट्रांग. अच्छा जदी एटा हला ताको एटा गुणी देले कोन हबो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट ताले केते हबो व्हिच इंप्लाइज नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू व्हाट इनटू व्हाट. मिस समिधा इज इक्वल टू व्हाट इनटू व्हाट. आई वांट टू हियर योर वॉइस. The molarity into volume of solution in ml. Very good. Molarity into volume of solution. लेखो आम गहन रे आसी पहुंची गले आशीष त्रिपाठी. वेलकम आशीष त्रिपाठी. देर में सही लेकिन आए तो सही. देर में सही लेकिन आए तो सही. पूरी वाला से जगन्नाथ धाम रो लोग पिला से आसी पहुंची गले. वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml तो गुण ताले गुण हमर मोलारिटी देछि 0.1 देछि मोलारिटी इनटू आशीष देछि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर देछि 200 ml. तादरे सेतरे केते मिलीमोल अछि 200 ml. तो गुणी देले हला 20 मिलीमोल सॉल्यूट अछि. मोल इज रिलेटेड टू मास प्यूरिटी.
प्योर सब्सटेंस रो मोल बाहरे मिलीमोल बाहरे ताकू मास रे कन्वर्ट आमे आराम रे मोलार मास रे गुणी देले हे गला मास किंतु मिली को मारिबा को पड़िबो सो मास इज इक्वल टू फर्स्ट किल मिली गोटे जेनोसाइड करो मिली इज किल्ड सो 20 मिली को मारिले कौन करिया पड़िबो आइदर 1000 रे हर किंतु जदि अंक रे तमे स्ट्रांग ताहले गुण 10 टू द पावर -3 रे इनटू मोलार मास केते सल्फ्यूरिक एसिड रो मोलार मास के कहबो केते हर्षिता केते हर्षिता Yes, sir, 98. 98 वेरी गुड एटा हिसाब कले केते आसुची केते आसुची 2 अस्ना 16 दुनु 18 के 19 शून्य इंटू 10 टू द पावर -3 रुद्र तुम्हें फर्स्ट टाइम पे यही भलिया सिली मिस्टेक कलो बाबा नुए आज्ञा सर तो हर इज ह्यूमन गांधी जहाँ को आमे पूजा करूचे आज भगवान भलिया ताकर कोन मिस्टेक हो नथिला निश्चय होत डर इज ह्यूमन ह्यूमन आमे हेची माने मिस्टेक वी आर प्रोन टू ससेप्टेबल टू मिस्टेक्स बट द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन बीइंग्स एंड नॉन ह्यूमन बीइंग्स other animals other living beings I'm not talking of living beings like plants other animals they have a little bit of mind but they do not distinguish between what is wrong what is right sankar bhoko helan mane khaibe if they are wild animal they will kill their prey and they will eat they will never repent but we sometimes we do mistake we repent and try to rectify and every day we try to become a better human being right यस सर okay तापरे एटा समस्ते बुझिलो मु गोटे छोटिया प्रॉब्लम देइतिली 200 मिलीलीटर 0.1 एम सॉल्यूशन सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन रे केते ग्राम मु नेइछि अच्छा मु गोटे तुमको रिएक्शन करेबी छोट छोट आंगुली प्रवेशात बाहु प्रवेशात आमे करबा धर पचारिबी व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 m sodium hydroxide solution will be required to completely neutralize सो पानी वॉल्यूम रे खेल ये सॉलिड नो एक सॉल्यूशन संगे सॉल्यूशन मिसा होची रिएक्शन कंप्लीट हबो केते खाइबो एथुरु केते खाइबो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज टे चेंज कर दोची एठी 100 ml ऑफ 0.2 हीरो मार्का हिसाब रे लेखुस टिके m/10 0.02 करथिले कोन हिन थांदा मु किंतु हीरो मार्का 0.2 into n/10 कली थाने 0.0 जाओ काहे हीरो मार्का हवा माने 0.2 डेसिमोलार छाड़ काहे के कम करबा एरा किया एमति कहूछ ये कहूची मते रुद्र कहबो कोन आम ढेंकानाल भाषा कहलणी एरा किया एमति होछ एरा किया एमति होछ 0.2 m सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन 0.2 m सल्फ्यूरिक एसिड लेखिला माने एटा सॉल्यूशन को मीन करिवो मोलारिटी लेखिछि माने डेफिनेटली इट इज ए सॉल्यूशन आउ सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन कहबा किछि दरकार नै एतिकी मोर क्वेश्चन होची व्हाट वॉल्यूम ऑफ 0.1 m sodium hydroxide solution will be required to completely neutralize 100 ml of 0.2 m sulfuric acid आमे सेही स्टोइकियोमेट्री करिबा भाग माप किंतु आगो मिलीमोल्स बाहर करियो पड़िबो कि मोल्स बाहर करियो पड़िबो आमे मिली वाला कारण हायर लेवल जो माने सब आईआईटी एडवांस पाई इंटरेस्टेड से माने अंक करिवो जो माने हार्डर प्रॉब्लम्स करिवो से माने आउ छोटो मोल रे कली कले हबनी मिली मोल रे कले इजी हि जिवो तुम करिया पाई सब तो वर्तमान दीटा जाक डेटा कहार देइछि मोलारिटी भी देइछि वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन पानी वॉल्यूम भी देइछि कहार ना सल्फ्यूरिक एसिड रो किंतु तार रिएक्टिंग तार आरो रिएक्टेंट जोटा सोडियम हाइड्रोक्साइड रो सॉल्यूशन रो वॉल्यूम देइनी पानी वॉल्यूम देइनी सोडा पचारिछि किंतु तार मोलारिटी कंसंट्रेशन देइछि एई कथा तो तेबे जोटार देइछि दीटा जाक डेटा तार मिलीमोल्स बाहर कर दबा आंसर नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के कहबो केते संगे संग m मोल मिलीमोल रो शॉर्ट नोटेशन होची m सर मोल ऑफ सर H2SO
केते सर 20 मिलीमोल 20 केते आयुष केते हर्षिता केते हर्षिता केते हर्षिता सर 20 मिलीमोल कहि परनो कहले मु केते माने मु केते एनकरेज हे जीवी समिधा Sir, 20. 20 so 100 into 0.2 समान 20 मिलीमोल हमर सल्फ्यूरिक एसिड हम नेइछु किंतु हमर सेटा बाहर करि परिबानी NaOH रो बाहर करि परिबानी कारण तार पानी और वॉल्यूम टा देइनी सेटा को बाहर करिया कोच आका चलो इक्वेशन लिखिबा NaOH कारण स्टोइकियोमेट्री माने बैलेंस्ड इक्वेशन स्टोइकियोमेट्री माने बैलेंस्ड इक्वेशन सो NaOH प्लस सल्फ्यूरिक एसिड समान सॉल्ट होची Na कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हबो नॉट पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन माने ए दीटे देखो एसिडिक हाइड्रोजन एटम पूरा चली जीव चलिक नॉर्मल सॉल्ट हो Na2SO4 प्लस वाटर बैलेंस करने पड़ो बैलेंस कले कौन हम 2 NaOH हम ये 2 वाटर हम तेबे जाइए भाग माप आम जापर केते मोल संगे केते मोल कंप्लीट रिएक्शन दरकार यार 2 आर 1 मोल मोल मिलीमोल मिलीमोल आमे मिली लोक सो 2 मिलीमोल NaOH खाइबो कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करबा पई सर गोटे मिलीमोल हां सर 400 मिलीलीटर अरे रुह टिके रुह बाबा टिके रुह हाँ ओके 2 मिलीमोल खाऊची 1 मिलीमोल एटा मु आगो इंट्रोड्यूस करूची आगो मु कर दिए तापर तुमको नेक्स्ट टा तुमको देबी 2 मिलीमोल खाऊची 1 मिली एटा भाग माप ताले हमर 20 मिलीमोल उल्टा करबा 1 मिलीमोल सल्फ्यूरिक एसिड खाऊची 2 मिलीमोल NaOH ताले 20 मिलीमोल हमर जो अछि ताकू खाइबा पई कंप्लीटली डिस्ट्रॉय करबा पई केते मिलीमोल दरकार हबो किए कहि परिबो प्रणव प्रणव फ्रॉम 40 जाजपुर मिलीमोल सर 40 मिलीमोल प्रिसाइजली 40 मिलीमोल तेबे रिएक्शन रे सबुतक सल्फ्यूरिक एसिड को खाई जिबा पई 40 मिलीमोल दरकार तबे हमें एतिकी सरी गला सो नंबर ऑफ मिलीमोल्स ऑफ NaOH रिक्वायर्ड होची 40 मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन देइची 0.1 सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रो मोलारिटी होची 0.1 देखो कोन देइची 0.1 तेबे हमर जो फार्मूला देइथिले मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मु ताको शॉर्टकट रे केम लेख देखो आउरी टिके हीरो मार्का हि जिबा को पिला को कहे M कैपिटल M इज इक्वल टू मिलीमोल्स बाय ml सो सो मिलीमोल्स देइची एवं मोलारिटी देइ सो मिलीलीटर इज इक्वल टू वॉल्यूम इन मिलीलीटर इज इक्वल टू कोन अयो सर मिलीमोल मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय मोलारिटी नंबर ऑफ मिलीमोल्स डिवाइडेड बाय मोलारिटी ये तीनटा तो जिनस मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मिलीमोल्स बाय वॉल्यूम इन मिलीलीटर सो नंबर ऑफ मिलीलीटर्स इज इक्वल टू मिलीमोल्स बाय मोलारिटी सो मिलीमोल्स बाहरला हमर भाग मापरु 40 खाइबो मोलारिटी देइची 0.1 ताहले केते मिलीलीटर खाइबो सीजल सर 400 400 मिलीलीटर दरकार हबो 0.1 m सोडियम हाइड्रोक्साइड ता धेरे ढाळिले सेकिंग कले कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हे जिवो 100 मिलीलीटर 0.2 m सल्फ्यूरिक एसिड रे जेते सल्फ्यूरिक एसिड अछि सब तक न्यूट्रलाइज हे जिवो सॉल्ट हे जिवो की बुझिला हाथ टेको सो आगे आगे देखिए हाउ वी शैल बी इवॉल्विंग द टॉपिक इन ए स्टेडी मैनर मोलारिटी रो मु इक्विवेलेंट कांसेप्ट तुमको कहि करी तुमको आउरी इजी कैलकुलेशन करबा पे इक्विवेलेंट कांसेप्ट टाइट्रेशन कांसेप्ट यूज करी करी आमे से सब बैक टाइट्रेशन भी करबा then you will be fear free you will not be scared to look at any stoichiometry solution stoichiometry volumetric analysis analytical problems जत्ते पढ़ले भी तुमे कहबो एई कथा तो टिके रहि जाओ एडे बडटा हेची मु लिखि दे आगो पढ़ी दे कि डाटा गुडा को सब आगो कागज कलम रे लिखि दे कोन कोन दोची केतेटा टाइट्रेशन होची इज इट ए सिंगल टाइट्रेशन की डबल टाइट्रेशन की ट्रिपल टाइट्रेशन कोठु आरंभ करबी जाननो देखो देखिए आगे आगे होता है क्या अच्छा मु ए जिंस को गोटे रिडॉक्स रिएक्शन रे व्यवहार करूची 250 ml of a certain
ferrous sulfate solution in presence of dilute sulfuric acid completely reduced redox reaction completely reacted लिखिथिले भी था completely reduced 150 ml of m/10 potassium मोलालोमा एठी तमरो बैलेंसिंग फटाफट करिया पड़ियो एमनो सॉल्यूशन फाइंड द मोलारिटी ऑफ ferrous sulfate solution सेठी वॉल्यूम टा अननोन थिला आमे वॉल्यूम बाहर करथुलु पानी वॉल्यूम टा सॉल्यूशन रो एठी सॉल्यूशन रो पानी वॉल्यूम देइची तार मोलारिटी बाहर करियो फाइंड द मोलारिटी ऑफ ferrous sulfate solution इना ए जिंस आमे तळे वो टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट रे एक्सप्लेन करिवि केमिति करा जाए एक्चुअली केमिति करा जाए विथ ए टाइट्रेशन एक्सपेरिमेंट देन आई विल टेल यू हाउ यू हैव टू टेक एन इंडिकेटर ए ड्रॉप ऑफ इंडिकेटर बुंदाए इंडिकेटर पड़िबो रंग चेंज हे जिवो गोटे प्रकार रंग रहिबो पोटासियम परमैंगनेट रे इंडिकेटर किछि निया जायनी से निजे गोटे रंगीन जिंस पर्पल कलर एंड देन कोटा को तमे ब्यूरेट रे नबो सब एक्सप्लेन करिवि एंड स्लोली तमे ऐड करी चलथिबो सेक करी चलथिबो एवं हठात करी जेतेबेले रिएक्शन टा कंप्लीट हे जिवो सडन कलर चेंज हे जिवो आई विल टेल यू व्हाट विल हैपन इन पोटासियम परमैंगनेट पोटासियम डाइक्रोमेट ए सब जिंस मु तुमको कहिबी तबे चलो बिफोर वी डू एनीथिंग चलो टिके प्रथमे आमे टिके बैलेंस करिबा KMnO4 सल्फ्यूरिक एसिड टा हेल्पर अछि टू प्रोवाइड एसिडिक मीडियम एंड फेरस सल्फेट कौन प्रोडक्ट हबो कहलो बाबा देखिबा मामा के कहि परिबो कौन प्रोडक्ट हबो ए पर्यंत तुम देखिछ पोटासियम परमैंगनेट जतले बैलेंसिंग करूथिलो मु आउरी रिडॉक्स रिएक्शन रो आउरी तीनटा क्लास नी मु ताको कट शॉर्ट करी गोटे रिडॉक्स 1 रिडॉक्स 2 करी रिडॉक्स 3 4 5 एडवांस रिडॉक्स रिएक्शन ताको मु छाडी देछि आउ तुमको मु से फाइल दे देले तुम पढिबो बट तुम सब करि परिबो नॉट दैट तुम करि परिबो बट एटा को जतले तुम बैलेंसिंग करिथिलो तुम जानिछ पोटासियम परमैंगनेट टा +7 स्टेज रु कोठी को खसे से जो मु छाडी देली लेक्चर उडा कहल रिडॉक्स 3 रिडॉक्स 4 सेथरे मु कहि थांती एसिडिक मीडियम रे परमैंगनेट टा +7 रु +2 को आसे अल्कलाइन मीडियम रे +7 रु +6 को आसे परमैंगनेट टा हुए मैंगानेट न्यूट्रल मीडियम रे +7 रु +4 को आसे हुए मैंगनीज डाइऑक्साइड सॉलिड किंतु डजंट मैटर एबे मु तुमको कहि देबी रुद्र कहिलो कोन हबो सर सर K2SO4 प्लस MnSO4 यस मैंगनीज टा प्लस +2 सबले +2 को आसे एसिडिक मीडियम सर प्लस सर Fe टा 2 प्लस 3 प्लस जाके Fe2SO4 होल 3 प्लस H2 प्रिसाइजली प्लस फेरस टा ऑक्सीडाइज हेले तार नेक्स्ट घाटी होची फेरिक आउ नाही फेरस टा ऑक्सीडाइज हेले फेरिक टा रिड्यूस होले फेरस सो फेरस सल्फेट टा हिजो फेरिक सल्फेट Fe2SO4 होल 3 प्लस वाटर सो ए जिंसटा वर्तमान पाई मु कहि दउची बैलेंसिंग किंतु तुमको करियो पड़ियो ट्राई करो आई गिव यू 1 मिनिट टाइम ओएन मेथड रे करि पारो जदि ओएन मेथड के तुमको लागुची भाबुच ताको आयोनिक इक्वेशन करिकरी बैलेंस करिकरी कोएफिशिएंट टा पाई गले सेही कोएफिशिएंट उडा का एडजस्ट करिवो कोठी ने मोलर इक्वेशन एटा किंतु सहज मैंगनीज टा +7 रु गला +2 को केते चेंज हला अरे चेंज केते हला 5 5 5 तले सर 5 5 नो रिड्यूसिंग एजेंट होचे एटा आयरन टा +2 रु गला +3 को चेंज हला 1 टा लिखा जायनी एत्ति की पाई गला परे then everything will be crystal clear पोटासियम एठी 2 अछि एठी 2 करिवा को पड़िबो मैंगनीज एठी 2 हे गलानी एठी 2 करिवा को पड़िबो आयरन एठी अछि 5टा बां पटे तेणु एठी 5/2 करिवा को पड़िबो परवर्ती काल रे आमे फ्रैक्शन टाको उडेई दबा तेणु एठी 5/2 कले 5 आयरन समान हे जिवो
आयरन संख्या आयरन संख्या अवश्य एपटे फेरस अच्छी सेपटे फेरिक अच्छी वी आर नॉट इंटरेस्टेड आम तो ऑटोमेटिकली सेटा हेजिबो हमें चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ वन रिएजेंट हमें मल्टीप्लाई करूचे विथ द अदर रिएजेंट एंड वाइस वर्सा करूचे तो हे गला देन हम ये देखिबा सल्फेट आयन केते होतिला स्पेक्टाटर तार किछि रोल नाही सल्फेट आयन रो किछि रोल नाही एठी गोटे सल्फेट एठी दुईटा सल्फेट 3 एठी 5 3 15/2 मोलालो मा एटी 3 जुक्त एटी 5 3 15/2 ताले केते हला Sir, 21/2. 21. सेथिरु पांचटा सल्फेट ऑलरेडी अछि 5 फेरो सल्फेट रे सो माइनस जदी 5 करिबा ताले लॉस आगु जदी हबो 2 Sir, 11/2. सो 11/2 हमर सल्फेट आयन दरकार जे जोटा की जोगेइबो किए ना सल्फ्यूरिक एसिड ताकू 11/2 कले हमकू हाइड्रोजन केते आसुची देखो हाइड्रोजन एठी 11 टा किंतु एठी केते आसुची एठी तो हाइड्रोजन कोठी नै एठी मध्य 11/2 करबाकू पड़िबो नकले ऑक्सीजन हाइड्रोजन समान हो नहीं हाइड्रोजन एथिरे गोटे सल्फ्यूरिक एसिड रछि एथिरे गोटे वाटर रछि आउ कोठी हाइड्रोजन नाही किंतु ऑक्सीजन तो समान हेलानी कि नहीं देखो 4 दुणे 8 जुक्त 11/2 इंटू 2 2 टू कटले 11 दुणे 22 एठी 5 20 50 एपटे केते हेलानी 4 जुक्त 4 दुणे 8 एठी 4 3 12 इंटू 5/2 56 30 एठी कोन 11/2 एठी तो किसी गंडोलिया हेलानी समथिंग इज रॉन्ग कौन आमे गंडोलिया करिचे टिके देखो कारण एठी 5 4 3 12 इंटू 5/2 एटा कटि गेलानी 30 एटा 11/2 हेले यार जदी 50 होतला एपटे होउनी कोन कर आउ टिके देखो चलो मूलरू आरंभ करिबा कोठी आमे भूल कलेनी धरा पड़ी जिबा जेतेबेले तबे थरे फेल मारिबो तमे कोन करिवो ना ताकू मूलरू पुनी आरंभ करिवो सेइथिरे क्लमजी करिवोनी Sir, algebraic method रे कर दो. काई कि मो काई कि आमे गोटे कोठी अति सिली मिस्टेक आमे करचे +7 रु +2 5 चेंज हला एटी 5 निश्चय गुणा हबो +2 रु +3 1 चेंज हला बास आ परे आमे सिली मिस्टेक करिचे निश्चय 5 आयरन अच्छी माने मैं एठी 5/2 करथिले नो डाउट सेटा को हमें बरकरार रखिबा पोटासियम एठी दीटा एठी 2 करिबा 2 गुणी देले मैंगनीज भी 2 हो गेलानी एठी 2 मैंगनीज करिबा देन हमरो आमे गुणी थिले तापरे सल्फेट आयन सल्फेट 3 प्लस 15/2 3 plus 15/2 213 plus 15/2 21/2 21/2 सल्फेट आयन राइट साइड रे हेलानी किंतु सल्फेट आयन ऑलरेडी 5 अच्छी -5 आमे करथिले सो हमर आसिला 11/2 सो 11/2 सल्फेट आयन आसीबो कोठू ना एठू से सेति हमें 11/2 करथिले किंतु हमरो हेला नाही हाइड्रोजन भी 11/2 कले किंतु हेला नाही ऑक्सीजन मिसिला नाही कारण एपट साइड रे हमें देखिबा 8 11/2 इंटू 4 22 एठी 20 50 एपटे ओ एठी वाटर रे 11/2 एठी करथिले नहीं 11/2 हेले एठी ऑक्सीजन 4 प्लस 4 2 जा 8 एठी 4 3 जा 12 इंटू 12/2
630 एठी 11/2 एठी फ्रैक्शनल आसुची समथिंग इज रॉन्ग सर आयोनिक इक्वेशन करी एक बार काहे की एटा मते बाहर करो कोठी मिस्टेक होउची काहे कि तुमे जो मेथड रे तुमे करो ए मेथड रे काहे करि परियोनी फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू व्हाट इज द mistake that we are committing that we have to find out आर मेथड तो अच्छी हमें करि परिबा किंतु ए मेथड टा बहुत इजी हमें काहे कि होउनी सेटा मते को यार चेंज ताधरे गुणले यार चेंज एक एक गुणा जाए तेणु एठी 2 कले एठी 2 कर देले अरे तुम कि आईआईटी एडवांस पिला मो एटा जदि तुम करि न परिबो मते कहि परिबोनी आमे कोठी भूल करूचे ताले लाभ कोन सर हेगला वाला को मेथड रे तो कलो सर एई ऑक्सीडेशन नंबर कली तापरे सर एई एफी से तो जो 5 टा गुणचे हाँ सेठी जो 5/2 गुणथले सेठी हाँ मु 5 गुण दे कि एठी एफएस फरे 10 गुण दे सर बाहचुची 2 के एम से कोन कला एफी एटम को सेम करिवा पई एटा को 10 कर देला वेल हाँ गोटे जिनस आमे एठी भूल करचे जेते बेले आमे एठी केएमएनओ4 रे 2 कले +7 रु +2 को आसीची 5 इलेक्ट्रॉन से गेन करिछि किंतु एठी 2 कर सलेनी माने दीटा Mn+7 अछि सो टोटल गेन इन इलेक्ट्रॉन विल बी 5 2 10 तेणु आकु 10 करियो तुम बाध्य हो कारण एई फेरस ही फेरिक हो से ठीक करिछि कोन एई सेथि पई पिला माने एटा को छाडी करी अन्य मेथड रे करी करी आकु पळे आसंती किंतु एटी देखियो पड़ियो पोटासियम को समान करबा को जाय करी एटी 2 कले फल रे एटी 2 मैंगनीज हे गला +7 वाला तेणु 2 गोटे मैंगनीज पाई जदि चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बा गेन इन इलेक्ट्रॉन होची 5 तेबे दीटा ऑलरेडी कर सलेनी माने टोटल 10 टा इलेक्ट्रॉन से गेन करिवो किंतु गोटे आयरन फेरस रु फेरिक को गोटे इलेक्ट्रॉन से लूज करूची तेणु एठी हमको मॉडिफाई करिया पड़िवो ओहो 5 को काटिकरी 10 करिया पड़िवो एठी 2 कला माने एठी 10 करिया पड़िवो सी किंतु से भाबिकरी करनी से लॉजिक भाबिनी से देखिला एठी 2 कर दे एठी 10 कर दे एठी 2 कर देबी ना कोन कलो एठी 10 करी एठी कोन कलो 5 हां एठी 5 हां एठी 10 करी एठी 5 कले आयरन एटम समान हे गला किंतु लॉजिक होची एटा एठी अन्य कोठी गुणिथिले किछि कथा न थांता गोटे एजेंट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रे हमें 2 गुणिले माने एठी मैंगनीज टा +7 स्टेट रो दीटा आसी गला सेही अनुसार ताकू इलेक्ट्रॉन लॉस संगे इलेक्ट्रॉन गेन समान करिया को एठी 5 को 10 करिया पड़ो एटा गोटे ट्रिक सो 10 कला माने एठी 5 कलो तापरे किछि असुविधा नै 5 कलो 5 हला माने आउ सल्फेट आयन 5 3 15 15 2 17 1 18 18 रु 10 टा चली गलानी एठी 10 टा अछि तेणु 8 एठी हेले 18 हे गला 8 हाइड्रोजन 16 टा हाइड्रोजन माने एठी मध्य 8 वाटर हला के बुझिला हाते को के बुझिला हाते को कोठी आमे अटकुथिले वेल तुमे जदी अटकिलो देखिलो तुमे तांको सांगे सांग कोन कलो
ना देखो आयोनिक इक्वेशन करो एटा परमांगनेट रु पोटासियम परमांगनेट रु पोटासियम आयन टा चली गला स्पेक्टाटर परमांगनेट एटी H+ आयन आसिला एटी फेरस आयन आसिला सेठी भी प्रॉब्लम हबो कारण एटी स्पेक्टाटर संगे पुणी एडजस्टमेंट पई प्रॉब्लम हबो देखो K+ इज स्पेक्टाटर सल्फेट इज स्पेक्टाटर हीरो मार्क होची Mn2+ एटा फेरिक आयन प्लस वाटर तमे गुटे मॉलिक्यूलर इक्वेशन रु आयोनिक इक्वेशन को कन्वर्ट करिवो अभ्यास करतिले संगे संगे अभ्यास करतिले सब जानि परिबो किए हीरो किए जीरो तापरे MnO4 माइनस एटी लिखिलो Mn2+ चारिटा ऑक्सीजन एक्सेस अछि 4 वाटर प्लस 8 H+ प्लस 5 इलेक्ट्रॉन मु टिके तरतर रे करूची मनोउणा करिवोनी फेरस हैला फेरिक एठी गोटे इलेक्ट्रॉन लूज कला तेणु एठी 5 इलेक्ट्रॉन गुणिल सो 5 इलेक्ट्रॉन कटिला सो एटलीस्ट तुम राइट साइड रे मध्य पाई परलो सहग माने कोएफिशिएंट सो परमैंगनेट प्लस 8 H+ प्लस 5 Fe2+ gives Mn2+ प्लस 5 Fe3+ प्लस 4 वाटर ये जो 4 वाटर पाई गलो तुमको बहुत साहाय्य करिवो तो वर्तमान आकु देखि करी आमे मॉलिक्यूलर इक्वेशन को बैलेंस करिया को चेष्टा करिवा तो परमांगनेट गोटे दरकार गोटे अच्छी आयरन Fe2+ 5टा दरकार एटी 5 कले कले परवर्ती काल रे आकु ये करबा फेरिक आयन एटी 5टा अछि एटी 5/2 करबा जोड़ा परवर्ती काल रे एटा 2 कटि जीवो एटी 10 हे जीवो वेट अच्छा आ हीरो मार्क को देखो एटी H+ अछि एटी 4 कले से परवर्ती काल रे 8 हे जीवो डोंट वरी आउ वाटर 4 अछि एटी 4 अछि मैंगनीज गोटे अछि पोटासियम एठी जोड़े अछि एठी हाफ करियो पड़ियो एटा इंटरेस्टिंग जिंस वाला हाफ करियो पड़ला हां बाय द वे आमे गोटे बड़ जिंस भूल कले आमर जो प्रॉब्लम हैला गुडे समय लूज कला एथि पई जे आमे एठी पोटासियम दीटा अछि एठी हाफ करथिले बढ़िया आइ थांता एठी 2 रे गुणियो पड़ न थांता जेहेतु एठी आको 2 करि दिले तेनु 10 करियो पड़ला सेटा सेति पई मोर भूल हैला जे मु तुमको एपट साइड को मु एठी K2 अछि एठी के अछि आकु देखि कि राइट साइड को एडजस्ट करिया करता थिला मु राइट साइड को देखि कि लेफ्ट साइड को कली तेणु हरड़ घणा रे हमें पढ़ले कोन ना एठी 2 कर दिला माने एठी 5टा 10 हबो सेटा र करि कि राइट साइड रे लेफ्ट साइड रे गोटे पोटासियम अछि एठी हाफ करथांते एठी हाफ करथांते एठी करदिले परवर्ती काल रे 2 रे मल्टीप्लाई करदिले ये 2 हेइथांता एटा 4 टा 8 हेइथांता एटा 5 टा 10 हेइथांता एटा हाफ टा कटि जाइथांता एंड सो ऑन राइट एटी गोटे एटा 2 हेइथांता एंड 5 टा 5/2 टा सेटी 5/2 टा 5 हेइथांता एंड सो ऑन जो जिंसटा एटी हेइ गला द इक्वेशन इज नाउ बैलेंस्ड तो देखिबो ऑक्सीजन समान अछि 416 16 4 20 20 एटा 20 40 एठी 2 युक्त 4 2 6 4 3 12 6 5 30 30 36 4 40 मु कहि छी ऑक्सीजन टा होची भात हांडी रु गोटे चिपिबो ऑक्सीजन समान अछि माने एकदम परफेक्टली बैलेंस किंतु हमको हटेबा को पड़िबो फ्रैक्शन तेनु होल थियरी 2 गुणी देले 2 8 10 K2SO4 2 MnSO4 5 फेरिक सल्फेट प्लस 8 वाटर हला तो बर्तन चली आसो इथु जणा पडुची तमर केते प्रैक्टिस तुम केते अछि तुमे जणा पड़ला एठी एक्चुअली एठी एया करिवार थिला मु जोटा भूल लाइन रे चली गली जहाँ फल रे टिके डिले हे गला तमे मते केही गाइड करि पारलनी सेति पई मु खेद प्रकाश करूची KMnO4 संगे सल्फ्यूरिक एसिड फेरस सल्फेट एठी हमर भूल हे गला एठी हमें 5 गुणी देले एठी 1 हैला एठी K2SO4 प्लस MnSO4 प्लस फेरिक सल्फेट प्लस वाटर ठीक अछि एठी 5 एठी 1 सरी गला परे राइट को देखो एठी लेफ्ट को देखो गोटे अछि एठी हाफ करिया कथा एठी 5 अछि एठी 5/2 कले किंतु एठी 2 गुणले किते मूर्खामी हमें कले हमें लेफ्ट को देखि कि राइट एडजस्टमेंट करूचे एटा को किंतु एटा को करूने एटा को कोन राइट को देखि लेफ्ट करूचे हमें किंतु तो करिवा कथा लेफ्ट को देखि कि राइट सब गुडा यूनिफॉर्मली आयरन पाई लेफ्ट को देखि कि राइट रे कले किंतु
पोटासियम पाई राइट को देखि लेफ्ट कले सेई गोटा का हमर ब्लंडर हे गला सो 5 वेरिटी 5/2 तापर सल्फेट आमे देखिबा हाफ सल्फेट 15/2 सल्फेट प्लस ए मैंगनीज तो ठीक अछि तेणु एठी हमर केते हला हाफ प्लस 5/2 प्लस 1 प्लस 5/2 हेले 15/2 हेले केते हला फोर्थ केते हला 15 four. 2 17 18 हां सर सेटा 5/2 ओ एटा 5/2 सॉरी 5 7 8/2 4 सो एठी 4 हे गला एंड देखिबो इक्वेशन टा 4 हेले एठी भी 4 करिया पड़ियो 4 कर दला पर इक्वेशन टा देखिबो बैलेंस हे जाई छी तापर 2 गुणिबो देखो केते टिके मु भूल कर देली नॉन कुड डिटेक्ट फॉर 5 मिनिट्स हमरो समय चली गला केही डिटेक्ट भी करि पारलोनी अंटिल गोटे बळदिया मेथड रे सीधा को चेंज करके 5 कर दला ठीक गला तापर कहला हे गला मु पतर जी लॉजिक कोन हमर भूल हला बाहर करिया को you failed anyway to err is human and to rectify is also human चलो अंक को आसो बैलेंस हे गला परे 2KMnO4 plus 8H2SO4 plus 10 ferrous sulfate gives rise to K2SO4 plus 2MnSO4 plus 5 ferric sulfate plus 8 water तो वर्तमान आमे दीटा सॉल्यूशन ऊपर हमर काम 2 मोल 2 मिलीमोल संगरे यार 10 मिलीमोल एई भाग माप और 1 मिलीमोल संगरे 5 मिलीमोल भाग माप होची 1:5 2:10 किबा 1:5 मिलीमोल एई रेशियो रे 1:5 मोल रेशियो हो कि मिलीमोल रेशियो ही जा भी हो सो 1:5 चलो वर्तमान डेटा कार्ड देइची चलो एते दूरे रे अछि हमरो दीटा जाकर डेटा देइची कोन ना पोटासियम परमैंगनेट रो पानी वॉल्यूम देइची मोलारिटी देइची कहले देखा नंबर ऑफ मिलीमोल्स केते होबो सर 15 मिलीमोल्स मिलीमोल्स ऑफ KMnO4 जार दीटा जाकर डेटा देइची 150 इनटू मोलारिटी केते देइची सर m/10 माने 1/10 आउ m तो लिखिबनी 1/10 तार कोएफिशिएंट 1/10 याकू कहते डेसीमोलार 1/10 टा डेसीमोलार सॉल्यूशन सेटा सो केते हला 15 मिलीमोल हमें KMnO4 नैथिले चलो भाग माप करबा जदी 1 मिलीमोल ऑफ KMnO4 खाउची 5 मिलीमोल काइना 2 संगरे 10 हले 1 संगरे 5 ताहले आमे जो नेइचे 15 मिलीमोल को केते मिलीमोल खाइबो फेरस सल्फेट 75 15 गुणन 5 75 मिलीमोल खाइब and then your turn is not to look at the equation then see what other data is given तार वॉल्यूम देइछि तेनु वॉल्यूम देइछि मिलीमोल्स बाहर सारलानी भाग मापरू वर्तमान मोलारिटी बाहर करबा कथा तेनु मोलारिटी इज इक्वल टू मिलीमोल्स बाय मिलीलीटर मिलीमोल्स बाहरला 15 एवं तार वॉल्यूम केते थिला 250 सो 15/250 हेले केते मोलार हबो एतिकी m 5 3 15 So 75 by 350. 3/50 ना केते हला नुए नमो भूलला हां हां 75 above. Yes. sir. 75 ओ 75 खाइछि बरा Yes sir. Yes sir. Oh. सही है coach. मु आई एम सो सॉरी एटी केते खाइछि कुआड गला हां एटी 75 खाइछि बरा मु कोन कोटु 15 कोटु आनली मु एटा कोन Sir KMnO4 नहीं गले. तळे लिखिली किंतु ऊपरे जेहेतु कैलकुलेशन टा ऊपरे कली तेणु मोर गोटे रही गला भूल जे एटा 15 खाइला किए ना KMnO4 किंतु 75 खाइला किए ना फेरस सल्फेट हमर फेरस सल्फेट रो मोलारिटी बाहर करिया पड़छ तेणु फेरस सल्फेट रो मोलारिटी हला नंबर ऑफ मिलीमोल्स होची 75 आई एम सो सॉरी बाय 250 कारण फेरस सल्फेट रो सॉल्यूशन रो वॉल्यूम निया जाइथिला 250 मिलीलीटर एबे ताको हरिले केते आसुची केते m केते मोल्स पर लीटर 0.3. 0.3 25 30 75 25 K 10 so 0.3 m is the molarity of the ferrous sulfate solution
out from that we have taken 250 ml 250 संगे 0.3 गुणी देले 75 हबो एवं से खाइबो तार 5 भागरु भागे 15 मिलीमोल खाइबो कारण मोल रेशियो हला 1:5 5 गुणा अधिका फेरोसल्फेट मिलीमोल बा मोल खाइबो कंपेयर टू KMnO4 सेटा हला भाग माप के कोन करिवो स्टोकियोमेट्रिक रिलेशनशिप होची सेया के बुझिलो कहलो वर्तमान मु इक्विवेलेंट कांसेप्ट को पुरेइबी वाह 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 अच्छा those who are watching in the direct YouTube are you able to understand please write in a comment box if you are following line by line what we are discussing here if you are a student class 11 student and you are watching now just write in the chat box yes I am following I understand what is going on okay hands down guys zoom guys hands down तुमको वर्तमान मु आउ टिके एनालिटिकल प्रॉब्लम्स करिवा पूर्वरु मु तुमको गोटे नुवा कांसेप्ट पढ़े दिए तापरे गोटे रिएक्शंस ना हम देखिले मल्टीपल रिएक्शंस तुमे करि परिबो बहुत इजीली whether using equivalent concept normality method or molarity method and I will give my judgment my opinion which method is really powerful in the long run which one will rescue you and will not put you into any difficulty I will tell you and I will ask you that question and I will take your feedback and then I will give my opinion I think you would be definitely reading out my mind at that time जे प्रकृति मु कोटा बेसी भल पाए बट आई विल टेल यू बोथ इक्विवेलेंट कांसेप्ट जोटा आजिकली बहुत उन्नत कहि दूची हो डेवलप्ड नेशन मानक रे यूएस रे यूके रे जर्मनी एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज रे इक्विवेलेंट कांसेप्ट वर्तमान उठी गला nobody is bothering nobody is teaching equivalent concept in school stage नहीं दरकार नहीं तार लिमिटेशंस बहुत अच्छी किंतु भारी तुमको एक्साइटिंग लागिवो कहीं सिंगल रिएक्शन पाई आउ बैलेंसिंग करबा को दरकार पड़िबोनी आमे गोटे गीत गाइबा आरंभ करबा all chemical reactions takes place in equivalence all is well थिला all chemical reactions take place in equivalence तमाने हमें जो देखिले KMnO4 और फेरोसल्फेट रो मोल संपर्क 1:5 आउ कहार 2:3 आउ कहार 3:7 डिपेंडिंग ऑन द बैलेंस्ड इक्वेशन किंतु इक्विवेलेंट कांसेप्ट रे 1:1 one equivalent of any reactant A whether it is a redox reaction or acid base reaction one equivalent of A will definitely completely react with one equivalent of B. So X milli equivalent of A will completely react with X milli equivalent. Millimoles and with MEQ. MEQ means milli equivalent. So let us know what is equivalent concept. Jemti molar mass, jemti equivalent mass EM. And that relates to the actual chemical reaction. Molar mass is fixed for those showing variable valency. The molar mass is not different. Iron ro molar mass is 56. Iron element ro. FeSO4 ro molar mass is 152. 56 plus 16 plus 64. It hala 96. It hala kete hala 152 it is fixed किंतु सेही फेरोसल्फेट जदि गोटे सॉल्ट आकार रे यूज हेथिबो इन ए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन फॉर ए प्रेसिपिटेशन रिएक्शन एर वैलेंसी होची 2 तेनु व्हाट वी कॉल द n factor is 2 that n factor is divided with the molecular mass divided by the n factor to get the equivalent mass so in reaction where ferrosulfate goes for a simple metathesis or non-redox with a valency 2 is retained, then 150 by 2 is its equivalent mass for that reaction. But when ferrosulfate is a reducing agent,
for the change in the number of electrons per ferrous sulfate molecule or per ferrous ion present in that structure, the number of electrons involved is 1. Ferrous ta ferric hochi, change in oxidation number is 1, number of electrons lost is 1, so the n factor is 1. So a reaction re molar mass by n factor, एक redox reaction रे ferrous sulfate ro n factor होची 1. तो ferrous sulfate ro equivalent mass जहा molar mass सैया. But सही ferrous sulfate जते बड़े यूज होची गोटे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन रे फेरस सल्फेट संगे तमे अमोनियम हाइड्रोक्साइड दलो फेरस हाइड्रोक्साइड गोटे ग्रीन प्रेसिपिटेट हला सेतरे फेरस सल्फेट रे इक्विवेलेंट मास केते ना बाय 2 152 by 2. So it depends on what is the reaction. So before that, let us know what are the n factors involved to find the equivalent mass of elements and compounds. First, elements. Equivalent mass is equal to molar mass by, for a student like you, it is the number of electrons lost or gained per atom. And you know, many people say my bhai valency, it carries little meaning. Elements, I'm saying element means the neutral state. Zinc, magnesium, aluminium, chlorine, element in neutral state. So valency bili kahanti, kintu ame kahu molar mass by the number of electrons lost or gained per atom, or change in oxidation number per atom. Eka katha. Per atom. For example, magnesium raw equivalent mass is always fixed. Karan magnesium never shows variable valency. Mutara in important and interesting aspect of equivalent concept mu koi debi. Then जो मु गीत बोलुथिली सेटा को आउ जोरे बोलिबी पूरा ऊपर सारु तळ सा पर्यंत नेबी लोअर ऑक्टेव रे भी जीबी हायर ऑक्टेव रे भी जीबी तार सप्तक रे मध्य सप्तक रे एंड मध्य सप्तक रे मते चारि आडे जीबी गीत बोल आगो मु कहि दिए मैग्नीशियम रो इक्विवेलेंट मास ई लिखुची मु इज इक्वल टू तार मोलार मास बाय 2 बिकॉज़ मैग्नीशियम जते बेले इन्वॉल्व होबो ए रिडॉक्स रिएक्शन एज ए रिड्यूसिंग एजेंट इट विल लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स Kimba reduce over by accepting 2 electrons, it will become Mg. So only 2 electrons will be involved. So magnesium or equivalent mass hamesha 12. 24 by 2, 12. Same thing sodium ra sabubale fixed 23 by 1, 23. Chlorine ra sabubale saman 25 by 5, 35 by 5, 1. Usually chlorine ta gote electron nei chloride ion hue. One element, got a single atom reaction. You don't say chlorine ta 0 ru plus 5 ku gala chlorate ion hala. Then you have to look to the change in oxidation number. If it is from neutral chlorine 0 to plus 5 chlorine, the change is 5. So the n factor is 5. So in this case, it is 1. So it is 35.5. But same thing I am apply kari. Oxygen, usually it is O2 minus way. So oxygen equivalent mass hala, 16 by 2, 8. Ta mane jodi oxygen ta gote electron neikire 2 electron nela beli. Gote electron neikiri O2 ta dita electron neikiri O2 2 minus hobo. So per atom change hochi 1. Per atom. Remember it lekha ichi per atom. So dita atom jodi dita electron gain kala. So per atom gote electron gain karibo. So change in oxidation number per atom is 1. So say case re oxygen will be 16 by 1, 16. Jodi O2 ta gote electron nei superoxide hela ei particular reaction re dita atom jodi gote electron gain karuchi tal gote atom phale electron gain karibo phale half will be the n factor. So ei case re O will be 16 by half. Half ta 2 ta diamar le upar ku 32 will be the equivalent mass of oxygen in this particular reaction where oxygen goes from 0 to minus half. But supposing iron sangare ame chlorine reaction kale ferric chloride midibo. Chlorine is a very strong oxidizing agent. So 0 to plus 3 ku jaichi. I am talking of only element. Mu compound kotha utike pare asibi. Titration experiment karibi. Kali ame problem kariba. Kali Kilimanjaro trekking kariba. I used to say in the last class is trekking Kilimanjaro, which is an African country re kon ta na भूल जाउची जो country रे Kilimanjaro अछि के कार मने अछि
Tanzania na kouthi African, not a developed African country, but a underdeveloped country re world ro second highest mountain peak achi Kilimanjaro. First was our Everest. We claim that Everest is in India, in Himalayas. So it is very, very risky to, summit. Sir, Huh? sir, Tanzania रे ଅଛି. Huh? Sir, Tanzania रे ଅଛି. Tanzania. Okay, so देखिए कोई दला. Good. So Kilimanjaro, unlike Everest, which is very risky, आ भितरे बहुत लोक समिट कलेनी. कौन की नॉर्गे किए करथिले प्रथमे? Sir, Tenzing Norgay. टेंजिंग नॉर्गे से करथिले ता भितरे बहुत लोक कलेनी, बहुत लोक मलेनी. इट्स वेरी रिस्की. 50-50 चांस अछि तमे समिट करिवो. किंतु the death rate for submitting तार हाफ रु अधा तार जो level from the sea level, I don't exactly remember, but it is less than half of Everest. So but it is the second highest mountain peak. So trekking and summiting the Kilimanjaro mountain is possible. Organized trip अछि तुमको नहीं जीवो तुम सांगरे, because I was in 2020 when Corona period was going on. So my younger son in US, he has a obsession for trekking. So suddenly he informed us that he is going in a six persons group to trek and summit Kilimanjaro. So from US, he went and met his other collaborators or other friends. One was from Australia, was a lady, some few others from UK and some various countries. Because there is an organizer, trip organizer, and they will send 2 persons to help you. Mozire mozire tome rahibo. तार बेस सब अच्छी भिन्न भिन्न जगह से खियापिया हम टेंट नहीं जीव से शुआ हम तो अल्टीमेटली समिटिंग करिवो 7 दिन कि मिनिमम 5 दिन लागे. So and there will be no Wi-Fi, nothing. You can't get any information once you start September 9. So all connections were disconnected. So we are really in a panicky situation. What will happen? And then ultimately we were keeping touch with the organizers. They thought, and the system was so foolproof, their helicopters will be always flying to see anybody is injured or anybody is sick. Immediately his or her trekking trip will be cancelled from then and there. He or she will be airlifted by helicopter to the ground and will be treated. So see confidence thila. So ultimately तार जो ट्रेकिंग समिटिंग पॉइंट टॉप तार पूर्वर गोटे बेस अच्छी सेठी 90% लोक फ्लैट मारिगले आउ जीवेनी ताको सिक हे गले. So fortunately my son and 2 or more, one of them is a lady, so 3 of them out of 6 or 7 could able to summit on the top of the trekking. So say setik bele mu introduce kartili this concept. So the last class tomorrow we are going to summit Mount Kilimanjaro. आगे देखिए होता है क्या. तो बर्तन ए रिएक्शन रे मु जदी पचरिबी आयरन रो इक्विवेलेंट मास केते तमे कते कहबो 56/1 कहबो ना 2 कहबो केते कहबो 3 कहबो. मु तुमको गुमराह करूची 0 ରୁ 3 चेंज हला 3 चेंज हला. सो 3 हरिले केते हबो 3 के 3 18.6 6. ओके. किंतु सेई एफी जदि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड दबो कि एचसीएल दबो ताहले सेटा +3 स्टेट को जाई परिबोनी. फेर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट ए स्ट्रांग ओए, सो एटा फेरस सल्फेट को जीवो प्लस हाइड्रोजन बाहरिबो. सो से केस रे सेई आयरन रो इक्विवेलेंट मास 28. एन फैक्टर टा 3 नो एन फैक्टर टा 2, सो इक्विवेलेंट मास 28.
equal to 56/2 because 0 ru +2 ku jaichi change heichi 2 so n factor hochi 2 so 28 আর 28 gram of iron will be 1 equivalent যেমতি 1 mole সেমতি 1 gram equivalent বা খালি equivalent यार এই reaction রে iron র 1 equivalent হচ্ছে 18.67 gram will be 1 equivalent for this reaction. So equivalent concept is a reaction specific. It is not the molecule specific, it is reaction specific. Same molecule tar change hotu oxidation number, change in oxidation number or loss or gain of electron per atom or per molecule as we now see. Molecule case upon to discuss karile. That depends on the change in oxidation number. That is the n factor, right? So bartman ame jiba compounds ର equivalent mass କେମିତି ବାହାର କରିବା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଟିକେ କହି ଦଉଛି ଧର ଆଲୁମିନିୟମ ସାଙ୍ଗରେ ଅକ୍ସିଜେନ ମିଶିଲେ ଆଲୁମିନିୟମ ଅକ୍ସାଇଡ ଦବ ବାଲାନ୍ସ କରିବା ଆଚ୍ଛା ଆଲୁମିନିୟମ ର equivalent mass କେତେ ହବ ଟିକେ ଅଲଗା ଜାଗାରେ କହିଲ ଆଲୁମିନିୟମ ତ କେବେ ଭେରିଏବଲ ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି ଦେଖାଏନି ତାର ଗୋଟିଏ 9 ଭ୍ୟାଲେନ୍ସି 3 ସେ 0 ରୁ +3 ku jibo na +3 ରୁ 0 ku asibo so change in oxidation number will be 3 or loss or gain of electron is 3 so kete habo 27/3 9 kete 9. 9 Miss Tripathi achanti Yes, sir. very good fantastic so 9 होची equivalent mass of aluminum every time aluminum रो कौन सी variable oxidation state 9 oxygen रो केते oxygen এটা normal oxide ହେଇଛି ତେଣୁ by 2 16/2 କେତେ per atom 0 ରୁ Sir, minus 8. 8 99.99 के 99 केस रे oxygen टा 8 normal oxide formation हुए कि normal oxide रो oxygen gas हुए so change in oxidation number per atom होची 2 किंतु superoxide peroxide case is very rare से केस रे peroxide हेले the n factor is 1 superoxide रे half 32 तार इक्विवेलेंट मास ओके नाउ आकु बैलेंस करबा आकु हमर मने पडुची एटी 4 हेतिला एटी केते हेतिला 3 हेतिला एटी 2 हेतिला हो कि नहीं Yes. yes sir. मोल अनुसारे 4 mole of aluminum atoms reacts with 3 moles of oxygen molecules or gas to give you 2 moles छाड़ खाली reactant देखिबा 4:3 रेशियो रे हेची 4 into 27 gram खाइबो किए कहि परिबो 3 into केते Sir, 32 gram. 32 6 into सिजल 6 into 16 कले हबो किबा 3 into 32 कले हबो हो कि नहीं तमरो रेडियो श्रीलंका बाजिलानी तमरो खोलुचो जेतेबेले माइक्रोफोन बीबीसी सॉरी सिलोन हम पिला बेले गुटे सिलोन होतला खोलो नहीं नमस्कार सिजल सीधा खोलो नहीं तो माइक्रोफोन खोलिले पूरा एक्सप्लोजन होउची अच्छा एतिक ग्राम एल्युमिनियम संगरे जदि एतिक ग्राम ऑक्सीजन खाउची ताहले 9 ग्राम खाइबो केते देखिबा 1 रे केते 9 रे केते 1 रे 3 into 32 by 4 into 27 into 9 हिसाब करो निश्चय 8 आसीबो कारण 9 होउची यार 1 इक्विवेलेंट 8 होउची यार 1 इक्विवेलेंट so 1 equivalent संगे 1 equivalent मु जानि करी 9 नै छी कारण aluminum रो equivalent mass होची 9 gram of aluminum is 1 equivalent of aluminum so से निश्चय खाइबो गोटे equivalent of oxygen equivalent mass is 8 so 8 gram of oxygen is 1 equivalent of oxygen so 1 संगे 1 ratio is 1:1 8 असला कि नहीं Yes. अरे Yes, sir. Yes, sir. 27 3 कटिला 4 8 जा 32 so 8 ग्राम सेथि पई मु कहली जे इक्विवेलेंट कांसेप्ट ता काहे की पावरफुल हेची फॉर बिगिनर्स लेवल काहे की ना मोल रो अनुसारे 2:3 हे पारे एक केस रे 4:3 हे पारे से केस रे 1:5 हे पारे किंतु इक्विवेलेंट कांसेप्ट रे सब बेले 1:1 x:x y सेथि पई गीत हला all chemical reactions take place in equivalence मो संगे को
all chemical reactions take place in equivalence. सब chemical reactions equivalence रे हुए यार जति equivalent तार जति equivalent जोटा मोल रे हेई पारे न होई पारे बाय चांस 1:1 मोल रेशियो धर H2 plus Cl2 gives 2 HCl so ये reactant रे 1 mole is to 1 mole balance कले भी हेई जाउची so that is by chance सब बेले 1:1 हबो बेले किछि ग्यारंटी नाही किंतु एथिरे मोदी को ग्यारंटी अछि गोटे ग्यारंटी भलो बाहरला पॉलिटिकल कैंपेन रे समस्त ग्यारंटी देलेनी बर्तमान सो इक्विवेलेंट कांसेप्ट रे ग्यारंटी अछि जे हमें प्रमाण करी देखिलेनी गोटे छोटो रिएक्शन रु जे यार 1 संगे 1 x संगे x क्लियर है रेज योर हैंड्स तल गीत बोलियो पड़िबो आरंभ करिवो तळ सारू सारे ग म प ध नि सा all chemical reactions take place equivalence एमती करिवो ननी करी कि पुन छाड़िबो तळ जा गोटे करिवो ओके तो वर्तमान हम कंपाउंड्स को जिबा कंपाउंड्स रु आगो देखिबा मेटाथेसिस रिएक्शन एसिड बेस रिएक्शन एसिड रो कोन केम बार करिबा इज वेरी सिंपल equivalent mass is equal to molar mass by a number of replaceable hydrogen atoms जति कि हाइड्रोजन एटम रिप्लेस एक्चुअली हेची नॉट दैट फॉर्मूला रे जति किटा अछि हां किछि नथिले यू फील दैट इट इज कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन सो सल्फ्यूरिक एसिड रो तमे जति सब बेले बाहर करिवो 98/2 दीटा हाइड्रोजन एटम अछि 49 वेल जदि कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हेची एस 49 किंतु जदि मु गोटे रिएक्शन लिखिबी NaOH प्लस गोटे मोल सल्फ्यूरिक एसिड देबी गोटे मोल NaOH रे गोटे मोल देबी से हबो गोटी हाइड्रोजन जीवो NaHSO4 plus water still आ गोटे एसिडिक हाइड्रोजन एटम अछि it will go for a second half neutralization एटा first half neutralization तमे कलो 1 मोल रे 2 मोल देले जाय Na2SO4 हबो किंतु 1 देले NaHSO4 तेनु गोटे जदि रिप्लेसमेंट हेची ए रिएक्शन रे इक्विवेलेंट मास ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड केते n factor by 2 ना by 1 sir by 1 by 1 सो यूजुअली जदि किछि न देथिबो हमें भाबिबा जे कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हेची दीटा जको हाइड्रोजन विदा हिचंती तेनु n फैक्टर 2 तेनु इक्विवेलेंट मास सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्शन रे 49 अदरवाइज 98 सेमिति बेस रो सेमिति बेस दी प्रकार रो गोटे होची हाइड्रोक्साइड मेटल हाइड्रोक्साइड बेस ता पई गोटे नियम ऑक्साइड बेस पई आ गोटे नियम माने सेही एका भलिया सो इक्विवेलेंट मास ऑफ हाइड्रोक्साइड बेस इज इक्वल टू मोलर मास बाय द नंबर ऑफ OH आयंस प्रोड्यूस्ड और रिप्लेस्ड रियली रिप्लेस्ड इट तो एक्चुअली कई गोटे रखंती ने प्रोड्यूस्ड सो धर मु कहबी सोडियम हाइड्रोक्साइड एथिरे गोटे प्रोड्यूस बाय वन मॉलिक्यूल so sodium hydroxide रे गोटे OH माइनस आयन अछि so the n factor or sometimes it is called acidity एटा को एसिड केस रे कहंती बेसिसिटी एटा बहुत बहि लिखाइ थिबो मोलर मास बाय बेसिसिटी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स ता बेसिसिटी नंबर ऑफ रिप्लेसेबल OH आयन्स ता होची एसिडिटी से टर्म आजिकली आ व्यवहार करू नांती सो ए केस रे तो इक्विवेलेंट मास ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड विल बी 40/140 किंतु से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने भी ताहले एथिरे दीटा हाइड्रोक्साइड आन अछि एवं आमे भाबुछु कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन निश्चय हेतिबो सबतक OH माइनस आयन पळेतिबो से केस रे इक्विवेलेंट मास ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड विल बी इक्वल टू आरो केते हेतिला थरे बाहर करथिले मोलर मास 40 34 17 दुणे 34 74 बोधे देखिलो अरे फर्स्ट फेज एग्जाम रो रैंक लिस्ट आई ओ तमे कोन क्लास आज्ञा सर आज्ञा ना, सर 74 ना ना मु आयुष्कांत रथ जे देखुचंती यूट्यूब रे से गोटे मोर प्रश्न पचारचंती दिस इज ए क्लास 11 फाउंडेशन प्रोग्राम से पचारचंती फर्स्ट फेज एग्जाम रो रैंक लिस्ट जदि एटा 9th क्लास रो बाबा ही थाए ऑलरेडी हम वेबसाइट रे लिखा ही जाईची जे रैंक लिस्ट बाहरिबो किछि दिन परे जून फर्स्ट वीक रे हबो तमरो ऑनलाइन कैंप क्लासेस एंड फॉलोड बाय गोटे वीक छड़ दिया जीवो मे बी
मोर रज पूर्वर 14 रज 13 तारिख दिन केते दिन मो पाखरे नाही 13 तारिख दिन जून 13 तारिख दिन पाखापाखी से डेट रे हबो फाइनल लेवल टेस्ट एंड अवार्ड सेरेमनी बाहर करी ये काली सरीगला पर क्लास 11 रो फाउंडेशन मो क्लास 9 रो माने जो माने 10th हे गेला 9th रो परीक्षा देकरी जो माने फर्स्ट फेज रु जाइछो तांकर सेकंड फेज एंड फाइनल फेज माई तुमरो नोटिफिकेशन बाहरिबो सो आयुष बाबू प्लीज बेयर विथ मी हैव सम पेशेंस थैंक यू सो इट हबो 74 बाय केते 2 by 2 37 and so on then oxide base माई धर कैल्शियम ऑक्साइड होची कोन जे इक्विवेलेंट मास इज इक्वल टू मोलर मास बाय नंबर ऑफ OH minus ion produced by the oxide base by reacting with water by the reaction of one molecule with water गोटे मॉलिक्यूल वाटर धर मो कैल्शियम ऑक्साइड रो मु इक्विवेलेंट मास बाहर करिवि तले कैल्शियम ऑक्साइड संगे पानी रे रिएक्शन कले हबो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटा ऑलरेडी बैलेंस्ड आ किछि बैलेंस नै सो गोटे मॉलिक्यूल रु जेतिकिटा OH माइनस आयन बाहरिबो सो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रे दीटा OH माइनस आयन बाहरिबो सो द n फैक्टर विल बी आल्सो 2 किंतु कैल्शियम ऑक्साइड रो मोलर मास यूज हो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रो नो so equivalent mass of calcium oxide will be 40 plus 16 56 by 2 28 देखुथबो मु टिके स्पीड नेलिनी पूरा पूरी गियर चतुर्थ गियर रे अछि मु फिफ्थ गियर को पळेबी हेले यदि कोनसी मोर कैलकुलेशन भूल थिबो रुद्र एंड अदर्स feel free to disturb me at any time आम गहणरू अच्छा बड़ भाई कृष्णा अच्छा आउ आशीष अच्छी आयुष तो रहिबो हर्षिता अच्छी समिधा सीजल रुद्र अच्छा ओके तापरे आमे जिबा salt रो salt used in non redox reaction বা metathesis reaction not redox reaction non redox reaction pai equivalent mass of a salt is equal to molar mass by total positive or total negative charge in a molecule in one molecule. For example, मु कहिबी aluminium sulfate रो equivalent mass केते हबो in a double displacement reaction of aluminium sulfate. किछ बैलेंस करिया दरकार नहीं. Once you know the n एका कथा नो रुद्र and others देखो सेठी बैलेंसिंग प्रॉब्लम होउतला एटी n फैक्टर प्रॉब्लम किंतु डिफरेंस होची n फैक्टर समस्त जानि थांते गोटे मॉलिक्यूल रे n फैक्टर बाहर करिया इजी किंतु एथरे होल इक्वेशन को बैलेंस करिया पड़ियो. So definitely a single step chemical reaction पाई गीत बोली दबो आराम रे हे जिबा टिके 5 मिनिट धैर्य धर आमे देखिबा जेमती होथला वॉल्यूम इन मिलीलीटर इनटू मोलारिटी होथला नंबर ऑफ मिलीमोल्स एक्जेक्टली सेमती होबा टिके परे वॉल्यूम इन मिलीलीटर इनटू normality will be equal to number of milliequivalents and we will introduce after a while another concentration term called normality. Number of equivalents per liter, number of moles per liter जेमती होतला molarity, number of equivalents per liter होची normal. Molarity जेमती होतला number of moles per liter, number of equivalents per liter हला normality. हमें टिके देखो आगे आगे क्या होता है. तो यार टोटल पॉजिटिव चार्ज केते हबो गोटे मॉलिक्यूल रो दीटा एल्युमिनियम तीनटा सल्फेट आयन जहा को तमे नियो टोटल टा +6 हबो कि नहीं. सो तो total positive charge and negative charge माने magnitude टा नबो. n factor is always a magnitude not a sign. So the n factor is 6 गोटे मॉलिक्यूल रे जो चार्ज अछि either positive charge नियो कि negative charge नियो तार magnitude होची 6.
सो आलुमिनियम सल्फेट रा मु साहस करूनी बाहर करिया पई mm/6 ये केते 600 केते हबो मार बोलिबो 254 युक्त 96 × 3 318 1 3 27 28 288 54 मो बाबा 342 342/6 देख ठीक अच्छी ना नहीं मु देख मुझे तरतर रे अच्छी तुम मैंने टिके मते हेल्प कर कारण आमे एठी सिनेमा देखियो को आछे एंड ए सिनेमा काम दबो दोज हु विल बी यू नो पर्टिकुलरली कंपटीशन माइंडेड से थ्रू जो कॉन्फिडेंस लेवल टा पाइबो से तार प्रैक्टिस करिवो पुनी सिकम रु आनी चले बसी डरी जीवनी आ बंधुगण सर वर्तमान 57 आसियो ना एटा 342 ठीक अछि तो आज्ञा सर Yes, sir. Yes, sir. हाँ हरिबाटा को मु कहूनी हरिबाटा तो बाएं हाथ का खेल तुम करिवो तापर आसला रिडॉक्स रिएक्शन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूसिंग एजेंट सेटा আছে अल्टीमेट सो ओए हो कि आरए हो तार मॉलिक्यूलर सॉरी इक्विवेलेंट मास जेमती एटम एलिमेंट पाई हेतला बिकॉज़ वंस यू टेक एलिमेंट it will be either reducing agent or oxidizing agent जो concept it is a good concept is the molar mass by number of electrons lost or gained per atom sorry per molecule or ion यदि ion पाई कहबो ion or change in oxidation number per molecular ion एका कथा change in ON per molecule or ion देखो देखो मु धर KMnO4 गोटे रिएक्शन लिखिली एसिडिक मीडियम रे गोटे रिड्यूसिंग एजेंट देले से Mn2+ को आसीबो गोटे इक्वेशन देखिदेली से जो इक्वेशन आमे करथिले आमे जोथि झुंटिले 10 मिनिट हमर गला केही मते साहाय्य कलनी सेठू रुद्र आंठी आंठी टे कहला देखो मु 10 कर दिले 5 कर दिले कि केडो बड़ भूल करथिले K2 टा सेठी हाफ राइट साइड को हाफ K2 न करकी आमे एठी 2 गुणथिले सेठी यदि 2 गुणथिले एठी 2 गुणिला कथा छी 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 अच्छा वर्तमान आमे देखिले जे मैंगनीज टा +7 रु +2 को जाउची केते चेंज हला जो ओएन मेथड रे जा करथुलो एक्जेक्टली सेया केते चेंज हला 5 सर 5 सही हला n फैक्टर सो एथरे इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 इज इक्वल टू मोलर मास बाय 5 गोटे मॉलिक्यूल पिछा बा गोटे आयन पिछा सो एटा हबो 158/5 31.6 एटा पिला माने मन रखि दियंती बहुत अंक एथरो हुए सो 31.6 इज द इक्विवेलेंट मास इन एसिडिक मीडियम बस सही KMnO4 मो जानि छुड़करी आयोनिक इक्वेशन दोउची just करिया पई in alkaline medium it will go to MnO4 2-, it will go to +6 +7 ru +6 केते चेंज हला मु तळे लेखुची not to confuse सर 1 1 so alkaline medium रे सेही परमांगनेट रो इक्विवेलेंट मास बिकॉज़ असल हीरो होची परमांगनेट आयन K+ किए पचारे तेन तो आयन टाकू नेकिर मध्य आयन इलेक्ट्रॉन मेथड रे भी करि परथांत एईटाकू एसिडिक मीडियम रे तमे जदि आयन इलेक्ट्रॉन मेथड रे करिथांत बी तमे 5टा इलेक्ट्रॉन पाइथांत एटी 4 वाटर प्लस 5 इलेक्ट्रॉन सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड or lost per ion or per molecule so either molecule रे oxidation number change देखो कि आयन जदि ता कर दबो जे हीरो मार्का जे असल ऑक्सीडेंट आयन होची परमांगनेट K+ टा होची तार स्पेक्टेटर K+ जगह रे Na+ ले भी से कथा कैल्शियम आयन भी से कथा ए कैल्शियम आयन हले मैंगनेट रो होल 2 होई डजंट मैटर असल पर मॉलिक्यूल पर आयन होल मॉलिक्यूल नेले दीटा मैंगनीज आसी पर आयन नेले गोटे आसी सो एटा हला बाय 5 सेमिति मते को पोटेशियम डाइक्रोमेट हमेशा क्रोमियम 3+ को जाए क्रोमिक सल्फेट हुए इन ऑल मीडियम्स सो +6 रु +3 को हला ताले के कहबा इन फैक्टर केते हबो एठी बुद्धि परीक्षा हबो ए रुद्र पाटी करन के कहबा इन फैक्टर केते हबो नहीं 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 भैया
कृष्णा भैया वेट करो डॉक्टर वुड बी डॉक्टर कृष्णा भैया कृष्णा अग्रवाल वेट तुम्हें तुम्हें आज आज गेस्ट आउ चेष्टा करो समिधा कहलो ट्राई करो समिधा Sir, 3. सीजल हर्षिता Sir, 3. Sir, 3. यस आशुतोष आयुष Sir, 6. प्रिसाइजली 6 अरे बाबू मु कहितली गोटे मॉलिक्यूल पिछा इंग्लिश रे ओडिया रे हिंदी रे जेते लैंग्वेज रे कहले कोन हो +3 रु +6 रु +3 गला 3 चेंज हला गोटे एटम पिछा किंतु एजेंट रे दीटा क्रोमियम एटम अछि इनटू 2 टोटल चेंज होची 6 सेति में बारंबार एठी लिखिछि पर मॉलिक्यूल और पर आयन एठी पर मॉलिक्यूल और पर आयन लिखिछि सो दीटा आयन हो Cr2O7 2- रे भी दीटा क्रोमियम एटम अछि K2Cr2O7 रे मध्य दीटा क्रोमियम एटम अछि तेणु n फैक्टर हला 6 बुझिलो तेणु पोटासियम डाइक्रोमेट रो हो कि डाइक्रोमेट आयन रो हो तार इक्विवेलेंट मास हो तार मोलर मास जति हबो बाय 6 नॉट 3 ता मोलर मास जति भारिबो बोते 298 भारिबो ना कोन देखिलो पोटासियम 39 into 2 क्रोमियम 52 into 2 एठी 16 into 7 112 एटा 104 एटा 58 एटा 174 की ना केते हला आज्ञा सर 174 बाई 6 केते 274. 274 274 बाई 6 केते सॉरी सर सेटा 78 हो ना म 174 ना 112 पर एटा सॉरी 112 हां केते केते हो सर 39 into 2 78 हो ओहो एटा 78 थैंक यू केते हला ताले एटा टोटल टा आई एम सो सॉरी 4 2 6 8 14 लाइक को 294 हां Sir, 294. 94 बाई 6 केते हला सर 49 तेणु 49 दीटा कॉमन बाहरलानी आगुरु थरे 49 जाइथिला कहारो 49 कहारो इक्विवेलेंट मास जाइथिला माने पकाओ खाता देखुनो खाता देखिले से जानिबो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड रो भैया जी ठीक कहचंदी सल्फ्यूरिक एसिड रो दैट टू सेटा नॉन रिडॉक्स रिएक्शन पाई सल्फ्यूरिक एसिड जदी ऑक्सीडेंट होबो धर +6 रु -2 H2S तयारी करबो हाइड्रोजन सल्फाइड +6 रु -2 चेंज हला 8 सो से केस रे द n फैक्टर विल बी 8 काली तो मु कहबी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन रे केमति तुम n फैक्टर बाहर करियो आज खाली त मूल दुआटा दे दबा तो आउ गोटे है 49 कहार ना पोटासियम डाइक्रोमेट फॉर ए रिडॉक्स रिएक्शन तार मेटाथेसिस रिएक्शन पाई सल्फ्यूरिक एसिड एंड दैट टू फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हैला तो सेमिति जदि फेरस आउ गोटे रिड्यूसिंग एजेंट नबा धर फेरस सल्फेट ता हमेशा फेरिक सल्फेट हुए फेरस ता +2 रु +3 को जाए ए डाहण पटे दीटा एटम थिले हम जास नै केते चेंज हला पर एटम पर मॉलिक्यूल केते चेंज हला सर 1 n फैक्टर होची 1 so a redox reaction रे equivalent mass of ferrous sulfate is equal to their molar mass by 1 same as molar mass it 152 by 1 that same as 152 and so on आउरी बहुत गुडा का मु तुमको करेबी बा देबी तुमे करबो सो ट्रिक्स अछि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन रे टिके बुझियो पड़ियो केमति इक्विवेलेंट मास बाहर करबा बट this is not required for a reaction for a solution stoichiometry जो करिया पई किछि तापरे आसो last but not the least normality आ गोटे way of normality तारो ये हला equivalents per liter or some people call it gram equivalents आमे ग्राम खाई जाऊ
किए ग्राम लिखुची आजकल किए कौन कहते ग्राम मोल सब मोल सब ग्राम सॉरी ग्राम इक्विवेलेंट पर लिटर एटा मोल पर लिटर एटा इक्विवेलेंट पर लिटर ता माने नॉर्मालिटी इज इक्वल टू सॉल्यूशन रो नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट EQ शॉर्टकट रे EQs ऑफ सॉल्यूट मु करेबी सब डोंट वरी नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स को शॉर्टकट रे EQs सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लिटर किंबा आमे जदि मिली लोक हबा ऊपर जदि मिली न करिबा से इक्विवेलेंस रे रहिबा नंबर ऑफ EQs ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000 रे मल्टीप्लाई करिया पड़िबो किंतु आमे तो मिली लोक उभय ऊपर तळ सब हमर मिलीमय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लिटर न करिकरी यदि ml करिबा ताले इनटू 1000 करिबा किंतु आमे आसी गले मिली वाला सो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट यदि ऊपर लिखिबा ताले किसी दरकार नाही नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स ऑफ सॉल्यूट divided by volume of solution in milliliter. तेबे बिफोर आमे करिया पूर्वरु तमे टिके मते कुह से मु जदि 7 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड नेइची कोनोसी गोटे सॉल्यूशन करिया पे इज इक्वल टू हाउ मेनी इक्विवेलेंट्स एंड हाउ मेनी मिली इक्विवेलेंट्स हलो जेमती मास रे मोलार मास हरिले नंबर ऑफ मोल्स बारुतला एवं जति कि मोल से 1000 गुणिले मिली मोल्स होउतला सेमती एथरे इक्विवेलेंट मास हरिले हमर नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बारिबो एवं से 1000 गुणिले सेटा हिजो मिली इक्विवेलेंट्स किलमंजारो ट्रेकिंग करबा का काली now we are at the last part of today's program normality बाहर करबा अब गोटे छोटो एसिड बेस रिएक्शन नबा कि रिडॉक्स रिएक्शन नबा गोटे वन स्टेप काली करबा मल्टीपल सक्सेसिव रिएक्शन एंड टाइट्रेशन एडा सब काली हे जी कांसेप्ट हे गला माने एगुडा बाएं हाथ का खेल particularly those who are uranium guys bunch चंदी कोची ए पर्यंत थाकी चंदी दी जण बाकी सब नुवा पिला doesn't matter से माने सब जो माने पुराना पिला से माने सब देखु चंदी आई एम श्योर YouTube वीडियो देखु चंदी नुवा पिला मध्ये बहुत लोग देखु चंदी वीडियो and those guys who have not subscribed आरंभकली व्यापार my channel please do so if you are benefiting, you like the program and you want to benefit further for a period of 2 years. Sometimes I make popular science topic more gote for upcoming popular science aguru jaithila gote tame dekhibo all of you should watch that seta hochi lithium ion battery ko man dekhicho the principle of lithium ion battery more प्लेलिस्ट को चल जीवो बहुत इंग्लिश रे अछि ओडिया रे अछि उभय रे लिथियम आयन बैटरी रो प्रिंसिपल एप्लीकेशन सब अछि देखिबो अब अपकमिंग रे होछि सोलर सेल रो कांसेप्ट फंडामेंटल्स ऑन सोलर सेल तारो लॉजिक एंड ये एंड ता पूर्वरु सेमीकंडक्टर्स विषय रे टिके आलोचना हबो जोठी सब कंफ्यूजन सब सृष्टि अछि आमे ताकू चेष्टा करिबा ताकू सॉर्ट आउट करिबा को होल्स आर रियली कोन एंड फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स तारो मेकानिज्म ऑफ होल माइग्रेशन होल करंट इलेक्ट्रॉन करंट एसो जिंस डिटेल डिस्कशन हबो एंड हाउ वी कैन डोप semiconducting virgin materials to form extrinsic semiconductor and that we make a junction to make a depletion zone in between and then allow the light to fall on it and then we get electrons come out of the depletion zone, form a potential difference and spontaneously migrate to the external circuit to make a circuit closed and we benefit out of the current. This is called the photovoltaic effect.
that I will explain in my upcoming video. That is popular, but among the study videos you can get from my playlist. When you enter, supposing in organic, you have some difficulty in organic stereoisomerism or isomerism or nomenclature, you can find those things in my playlist. So कहार आंसर है मु गपुतली एई दी जण आउ सब पुराण शुणुच नहीं भैया जी तुम्हें तो अच्छा भल कहब हो आयुष कहल Sir, 0.1428 equivalent and 0.1428 142.8. आउ केते मिली इक्विवेलेंट Sir, 142.8. से आहिची मिस्टर रुद्र Sir, mo- केते हिची sir 3.5 equivalence and No, 3.5 equivalent. ना यू आर रॉन्ग 3 पॉइंट के 7 ग्राम परा अच्छा किए कहि परिबो सल्फ्यूरिक एसिड रो इक्विवेलेंट मास केते मु कहिची जदी कोनोसी रिएक्शन देइ नथिबो तेबे 49. ताहारे दीटा जाक हाइड्रोजन एन फैक्टर होची 2 सो 98/2 49 सो 49 होची सल्फ्यूरिक एसिड रो इक्विवेलेंट मास फॉर कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन जदी किछि न देइ थाए तबे नबो 49 सो 49 देखो 49 ग्राम जदि हला 1 इक्विवेलेंट ताहले 7 ग्राम समान केते इक्विवेलेंट 1/49 into 7 1/7 माने 0.1 हेले 3 30 728 20 माने 14 ये ठीक करिछि एति की होछि तार नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स व्हिच इज अ फ्रैक्शन एवं मिली इक्विवेलेंट हवा को हेले सो इज इक्वल टू 0.1428 into 1000 जेमती गोटे ग्राम समान 1000 मिलीग्राम गोटे लिटर समान 1000 मिलीलीटर सेमती गोटे इक्विवेलेंट समान 1000 रे गुणिले डेसिमल पॉइंट शिफ्ट हे जिवो 142.8 मिली इक्विवेलेंट्स एटा हला इक्विवेलेंट्स और समिधा जनरल नंबर ऑफ EQs फॉर्मूला हला मास by equivalent mass and milli equivalents हला कौन ना equivalents into 1000 so directly जेमती number of moles बाहर करियो गेले mass by molar mass रे हरुथिलो ए molar mass जगह रे तमे equivalent mass नबो हला तो केते हला डायरेक्टली जदी बाहर कर थांते equivalents is equal to 7/49 is equal to 1/7 and number of milli equivalents हला कौन ना 1/7 into 1000 हला के बुझला हते को अच्छा जदी नॉर्मलिटी होची नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स अबा नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर ताले नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू केते इनटू केते सेते हेतिला सेतिरे सो नंबर ऑफ मिली इक्विवेलेंट्स इज इक्वल टू केते इनटू केते Normality into volume solution in ml. नॉर्मलिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर एठी थिला मोलारिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर नंबर ऑफ मिलीमोल्स टा एटा होची एटा अच्छा मु आउ करेबी ने आजी खाली गोटे क्वेश्चन तो होची फाइंड द नॉर्मलिटी एंड मोलारिटी ऑफ कहूनी मोलारिटी ऑफ KMnO4 सॉल्यूशन containing say 3.16 gram of KMnO4 in I say the 100 ml solution एटी लिखा है जे KMnO4 is used as OA in acidic medium नॉन तुम एन फैक्टर जानि परियोनी किछि जदि न देई थिबो ताले तमे प्रिज्यूम करिवो दैट इज यूज्ड इन एसिडिक मीडियम तो इटा लास्ट प्रॉमिस मी आई विल नॉट बज एन इंच बिकॉज़ तुम मुंडोटा पूरा टाइल धरलानी
तुम्हें पूरा रिलैक्स करवा परे जाइकरी आउ आमे किछि मु देई देबी तुम्हें करबा पई किछि मोलारिटी बेस्ड प्रॉब्लम मु देई देबी मोलारिटी अनुसार आ काली इक्विवेलेंट मास कांसेप्ट सरला परे और प्रॉब्लम सरला परे बैक टाइट्रेशन पर्यंत मु नै जीवी सब परे तुम करिवो तुम आराम रे करिवो एवं तुमे मोर काली सब कहबी मु आउ सब जनरल प्रिंसिपल कहबी हमर स्ट्रीम टाकू वाइट यूट्यूब टाकू बंद कर देकरी आमे तुम संगे टिके डिस्कशन करबी जो माने जूम रे अटेंड करछो फॉर गेटिंग माय कंटिन्यूअस हेल्प तुम्हें जदि चाहिबो मु तुमको गोटे ऑफर देबी टाइमिंग कर देबी सो से टाइम रे मते खोजी पाले मु बेलिबी और एल्स कंटिन्यूअस बेसिस रे मध्य तुमको हेल्प करि परिबी सो सेटा तमे मते कांटेक्ट करिवो मु काली सेटा डिटेल्स कहबी एटा केते हला आयु सरलाणी मोलारिटी बाहर करो नॉर्मलिटी बाहर करो नॉर्मलिटी बेलू को एन फैक्टर दरकार मोलारिटी पई किछि एन फैक्टर दरकार नहीं गोटे कि चैट देछि चैट रे लिखि छंती ये सर टुडेस क्लास रियली बेनिफिशियल टू मी ओ कृष्णा ओ भैया जी हाँ तमे जो थिलो मो पाखरे सेतळे एटा पढा है नथला एंड यू आर ए ब्रिलियंट बॉय सो डेफिनेटली I forgot to tell you about the yesterday's class idiometry. No problem, I will sit with you if required to discuss. Idiometry किसी solution नहीं, खाली gas phase reaction, and that works on the Gay-Lussac's law, Avogadro's law. That the gaseous volumes are also proportional to the number of moles in this balanced equation. Well, से गोटी हाथ रही इवेन आमर रुद्र शोई पड़ले रुद्र हाथटा तुम देखुथि जमती सेटा नहले असुविधा देख मोलारिटी तो आगुरी जानिचे आमे सेठी सांगे सांगे बाहर करिवा मोलारिटी इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स 3.16 बाई के कहबो KMnO4 रो मोलार मास केते So 158. ये सीजल ठीक कहते 39 plus 55 plus 16 fours are 64 158 so 3.16 by 158 is the number of moles by volume of solution in liter किंबा volume of solution in milliliter into 1000 जहा करो जहा गोटे करिबो कंसिस्टेंटली सेया करो सो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट ताको मिलीमोल करिया दरकार नहीं जोटी दरकार वॉल्यूम अंक कला बेले वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस करले वॉल्यूम पानी वॉल्यूम देथियो मोलारिटी देथियो कि इक्विवेलेंट नॉर्मलिटी देथियो से दिटा गुणी करी मिली मोल्स कि मिली इक्विवेलेंट्स पाइबो तो येठी नॉर्मलिटी बाहर करिया पे मोलारिटी बाहर करिया पे मिली कई करिवो काई डायरेक्टली नंबर ऑफ मोल्स कई न करिवो केते बाहरला एटा 0.2 0.2 0.2 m बा मोल्स पर लिटर अच्छा इक्विवेलेंट्स केमति बाहर करिवा से एका नॉर्मल सॉरी नॉर्मलिटी केमति बाहर करिवा नंबर ऑफ इक्विवेलेंट से 3.16 बाई केते हरि बिको बाई इक्विवेलेंट मास आगुरु आउ टिके पूर्वरु आमे आमे से वैल्यूटा मु देई देइथिली एसिडिक मीडियम रे द एन फैक्टर होची 5 ताहले व्हाट इज द इक्विवेलेंट मास ऑफ KMnO4 31.6 केते 31.6 विदा 158 by 5 31.6 मन पकाओ मु आउ टिके पूर्वरु कहितली एसिडिक मीडियम रे KMnO4 रो इक्विवेलेंट मास होची 31.6 सो मास बाय इक्विवेलेंट मास 31.6 एटा होची नंबर ऑफ इक्विवेलेंट्स बाय एका जिंस वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन मिलीलीटर इनटू 1000 तो डेफिनेटली यार 2 टाइम्स बिकॉज़ सर 5 टाइम्स अधिक हबो कारण n फैक्टर रे गुणा हेले मोलारिटी को नॉर्मलिटी हबो किबा नॉर्मलिटी रे हरा हेले n फैक्टर you will get molarity if at all they are not same if the n factor is not 1 it is other than 1 then n factor is a factor to convert molarity into normality and vice versa केते हला एटा 5 गुणा अधिक आइथिबो केते हो 1 exactly 1 1 n I'm so sorry 1 n बात कोन नॉर्मल सॉल्यूशन
ଯେମିତି ମୋଲାର ସଲ୍ୟୁସନ ଆଉ କହନ୍ତି ନର୍ମାଲ ସଲ୍ୟୁସନ ନର୍ମାଲ ସଲ୍ୟୁସନ 1n ତା ମାନେ ଏଠୁ ଜାଣିଲେ ନର୍ମାଲିଟି ସେଇ ସଲ୍ୟୁସନ ର ନର୍ମାଲିଟି ଇଜ ଇକ୍ୱାल ଟୁ ମୋଲାରିଟି इनटू n फैक्टर जे n फैक्टर 1 ही था नॉर्मलिटी जहां मोलारिटी से या or which implies molarity is a numerically lower value if they are not same normality by n factor तेणु जदि गोटाए बाहर करदेल 0.2 बाहरला n फैक्टर रे मल्टीप्लाई करदेव कारण नॉर्मलिटी टा न्यूमेरिकली ग्रेटर सो 0.5 रे मल्टीप्लाई करदेले 1 आसी जीवो तेणु आगुरु मु लिखि नथिली नॉर्मली इक्विवेलेंट मास टा लिखि नथिली इज इक्वल टू मोलर मास बाय n फैक्टर n फैक्टर जो जिनसटा आमे डिस्कशन कले सब प्रकार रो कंपाउंड पई एलिमेंट पई n फैक्टर टा होची द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड फॉर रिडॉक्स रिएक्शन एंड फॉर मेटाथेसिस रिएक्शन either it is acidity or basicity or total positive charge or negative charge. That's it. How did you like it? ऊपर ऊपर गला कि एठी गला ना एठी गला ना एठी गला ना एठी गला आ तळକୁ जाउनी सो कोठी गला ना कुंथेई कुंथेई कि चलीची कोन रुद्र इज इट ओके Yes, sir. किछि तो हमकु ये करूना आजिकली यू आर नॉट मोटिवेटिंग अस अरे मोटिवेशन शुड बी you know reciprocal when a instructor or a teacher will motivate a student should equally try to motivate माने कोन ताकू पढियो सी एक्सपीरियंस करियो सर भल लागिला कि कोन हला से जो एक्साइटमेंट से पाइला ड्यूरिंग द कोर्स से शेयर करबा उचित शेयर करले जाइकरी आज मु कहूनी कर तुम से हैबिट टा रख भविष्य रे wherever you go जणुठु जणु जोटे किछि पाइलो एवं पाइकरी तुमे एक्साइटेड हेलो देन यू रेसिप्रोकेट तो कहबे को लाज लागुची लिखि के दे दियो बाय बाय काली देखा हो Pranam, sir. Thank you, 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 sir.